Again, I'll try to focus on past paper questions and I'll quickly go through the basic idea of each and every term that is going to be used. देखिए kinematic is about study of motion. सही है, तो स्टडी के लिए आपको पहले तो टर्म्स क्लियर होने चाहिए. टर्म्स में पहला टर्म जो है, या बिफोर वी डिस्कस टर्म्स, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इट वाज एट पॉइंट ए और उसने कोई लेंथ ऑफ ट्रैक ट्रेवल किया है, बी तक आया. इस ट्रैक का लेंथ था लेट्स से 550 मीटर्स. ठीक है, अब और यहाँ पे टाइम जो था वो 0 था और यहाँ पे टाइम व्हाटएवर 30 तो कम है, लेट्स से 65 सेकेंड्स में वो यहाँ पे पहुंचे. ठीक है, तो जो टर्म्स आपको आने चाहिए, एक तो आपके पास डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस ये होता है कि इट्स द टोटल लेंथ कवर्ड. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. इस पूरे लेंथ का ये जो ट्रैक का लेंथ है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस इतने इसने कितना ट्रैवल किया. ठीक है, ये इस केस में भी हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, 50 मीटर वो ऊपर गया और वापस वो लैंड हुआ है एट मे बी वापसी में उसने 30 मीटर्स ट्रैवल किए. ठीक है, सो O to A is 50, A to B is 30. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि the distance is 80 meters. So total length को हम distance कहते हैं. It's a scalar quantity which means you don't have to give direction. ठीक है, लेकिन at the same time we need another term that is displacement. Displacement ये होता है कि from start to end what is the shortest length. ठीक है, ये जो वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास ये 400 आ रहा है. सो ये दो इट वाजंट अ ट्रैक दैट वाज फॉलोड, ऑब्जेक्ट तो यूं गया था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि वो हमें लोकेशन बताता है कि दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस द एंड पॉइंट. तो वेयर हैज द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड. So it's the shortest length between 2 points, and since it's a vector quantity, so you need to specify with direction कि ये किस साइड पे गया है. ठीक है, अगर ये डिस्प्लेस हुआ है 400 मीटर्स तो किस एंगल के साथ डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट के केस में यू नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन. ठीक है, सेकेंडली अगर मैं वो ये वाला एग्जाम्पल देखूं कि एक ऑब्जेक्ट 50 मीटर्स ऊपर गया था, फिर वो वापस 30 मीटर्स पे कोई क्लिफ था या व्हाटएवर, उस पे उसने लैंड किया है. टू स्केल अगर मैं बनाऊं 30 मीटर्स थोड़ा सा ज्यादा है, मोर देन हाफ, दिस इज वेयर द ऑब्जेक्ट हैज लैंडेड. तो इस केस में डिस्टेंस तो 80 होगा बिकॉज इट्स द टोटल लेंथ कवर्ड. बट इफ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, स्टार्ट एंड दिस इज वेयर इट स्टॉप्ड, तो डिस्प्लेस कितना हुआ है? 20 मीटर. 20 मीटर टू नॉर्थ, मतलब ये दिस इज वेयर इट हैज डिस्प्लेस्ड. ठीक है, इफ यू वांट मी टू रिपीट, मुझे बता दें, आई रिपीट दैट पॉइंट. तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में. इट्स ऑल अबाउट द जर्नी. ठीक है, तो ब्लाइंड मेमोराइजेशन ना करें डेफिनेशंस वगैरह की, आपने प्रैक्टिकली इसको समझना है. So sir, how does this come as a question? Any example? So basically, when we talk about the question, these are the prerequisites that are required. A question will never be in terms of a simple diagram. They'll start with graphs. A question is always on the basis of a graph. So we'll discuss graphs first, and then we'll go to the past paper questions. So you don't worry about the questions right now. Try to focus on the concept.
and we'll discuss questions. If not today, tomorrow we'll talk about questions related to kinematics. ठीक है? Speed is when you divide the distance by time. So it's a scalar quantity. So maybe it took 65 seconds. If you divide 550 by 65, you get how many meters were covered per unit time. Okay? If we talk about velocity, velocity is displacement over time. But again, the difference is in terms of scalar and vector. Okay? So if you divide 400 over 65, this will give us the velocity. Okay? There is one more point. If we talk about velocity, velocity can be positive or negative. Okay? A positive velocity means that an object is moving to right 30 meters per second. Let's say it has collided and now it's going back. So if it goes back with 25 meters per second, we can assign a negative sign. Okay? So whenever you see a negative velocity, it means the object is moving in the opposite direction. Sir, This is what one about point. retardation? Well, that is acceleration. That's the fifth term. So I have not yet started the velocity, the acceleration and deceleration or retardation. Okay? I'm talking about velocity right now, which tells us how much of the displacement has been covered per unit time. What if there's another point? There was a question in which an object started its journey and came back to its starting point. So it started and the end, both of them were at the same point. Let's say the radius was 10 meters. So if we talk about distance over here, the distance will be the circumference of the circle. But if we talk about displacement, that will be 0 because the object has not been displaced after the end of the journey. It has returned to its starting point. Okay? So it is possible for a journey that the object may travel quite a distance, but the displacement might be 0, which refers to the fact that the object has returned to its starting point. The fifth term is again speed, but with pointed brackets. What do these show? Yes, Inam, you're right. Average speed Sir, ये हमें greater or बताता है. less? Greater or less? नॉर्मली अगर एक हो फिर तो ये ग्रेटर या लेस शो करता है, बट इफ अ सर्टेन क्वांटिटी इज इनक्लोज्ड, जिस तरह अगर ये शो किया है तो दिस इज एवरेज टाइम. तो फिजिक्स में एवरेज इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटेड ब्रैकेट्स. ठीक है? और इसमें ये होता है कि इट्स यूज्ड in situations where you have to divide total distance, not total speed, by total time. It is applicable where you have to find speed where object has traveled multiple in multiple parts of a journey. ठीक है? जिस तरह from A to B, the object speed was 30, the time was maybe 50 seconds. Then B to C, the object speed was maybe 150 and the time was 10 seconds. So you don't just add the two speeds and divide by 2 to find the average speed. You have to stick to the formula. You need to use distance is equal to speed into time to find distance over here. Then you find distance over here. And then you add the two distances to find the total distance. And then you divide by the total time. So in case of average speed, this is the formula that you have to use.
ठीक है, ये ना हो कि आप स्पीड्स को ऐड करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्पीड कर लें. ठीक है, so this is what average speed is about. Moving on to the last term. After that we'll talk about graphs. So the last term is acceleration. So acceleration tells us about how much change has occurred in velocity per unit time and has a unit of meters per second square. ठीक है, so an object going in a straight line with a constant velocity, be it very high, maybe 1300 meters per second, ठीक है, even in this case the acceleration is zero because the velocity is not changing. ठीक है, so acceleration is all about how much change is occurring in velocity. So if I have a sequence of velocity values, let's say we start from time and velocity in meters per second. So if I have a in 1 second a jump of 8, in 2 seconds it goes to 16, 24, and so on. So the acceleration over here is 8 meters per second square. But if the velocity starts to increase with a smaller amount, maybe in 4 seconds, the velocity is 26. So what do we call this? What should be the acceleration over here? 2 meters per second. 2 meters per second square. ठीक है, the acceleration is still positive. Sometimes students confuse this with deceleration. It is not deceleration. The velocity is still increasing. It's still going from 16 to 24, 24 to 26, but the amount of acceleration has reduced. First, the jump was in terms of 8. Now it is in terms of 2. But let's say if the velocity starts to actually decrease, maybe it comes down to 25, then it comes down to 22, maybe 19, and so on. So now we are going to say that the object is what? What should I say? 3 meters per second square. Deceleration. Deceleration. Oh, yes. हाँ, या retardation या acceleration is negative. You can all use all of these terms. तो ये हमें वो बताता है. ठीक है, so there has not been an instant where velocity is constant, or otherwise we would have written 0. So anyway, coming back to the formula, this is change in velocity. Change has a symbol which is delta. Delta is always used whenever you want to find change, which is always final minus initial. In case of velocity, V represents final velocity and U represents initial velocity. Divide by time and you get the amount of acceleration. ठीक है, तो ये आपके पास total terms हैं for these kinematics के ये 6 terms हैं. ठीक है, अच्छा, so this is half of the chapter which deals with these terms. The other half, which is significantly, it plays its role in the question. This half deals with graphs. I'll give a very basic idea of graph. I won't be able to cover the entire graph today. We should be done with graph tomorrow, and we'll talk about free fall, and we'll discuss few questions from past papers. I'll upload another worksheet, but it is very important. Okay, you should be able to understand all the aspects of graph. Okay, so whenever you have
a graph, it can tell you a total of 4 quantities. Okay? It can tell you what we have on y-axis. Okay? So one quantity is y-axis, one quantity is x-axis. The third quantity that it can tell us is gradient. So if I have point A, point B, I can use coordinates, the y, this is y2, this is y1, divide by x2 minus x1. So this is the third quantity it can tell us. So this is first, second, third. A fourth quantity, a graph can tell us, which in different cases have different meaning. That is area under the graph. And the area is based on the shape that is being made. In this case, it will be triangle. So half into base into height. Okay? It can be a trapezium. So if an area that is covered, you can split into triangle and a rectangle over here if you want. But trapezium is better. It will help you use less number of steps. So the formula over here is half into sum of parallel sides. These two sides are parallel. Now, sometimes students memorize it as height. Do not memorize it as height. It is length between parallel sides. In this case, the length is L. Okay? It can also be in a form of rectangle. If you want to find this area, this is the simplest one, which is A into B. Okay? Now, this is just a background on graphs. Before we start graphs of kinematics, a brief idea of gradient should be clear. What we'll do is, I don't want to leave the topic in the middle, especially the gradient part. We'll talk about gradient tomorrow. Okay? Okay, basically, how do you predict, or how do you what do you say, infer, okay, what do these gradients tell us? Okay, if the gradient is like this, if it is like this, or if it is a straight line, multiple straight lines, and so on. So we'll talk about all of these tomorrow. Okay, so I'll conclude for now and make sure you complete the worksheet. Okay. Well, कि देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू ग्राफ्स, और ग्राफ में सबसे पहले फिर ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट बेसिक पता हो कि फॉर इंस्टेंस आपके पास एक लाइन L1 है, या लेट्स से मेरे पास इस तरह के एक स्ट्रेट लाइन L1 है, L2, और फिर एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड देन आई हैव L3. ठीक है, अगर मुझे L1 का ग्रेडियंट फाइंड करना है, आई कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन. ठीक है, आई यूज द फॉर्मूला y axis over x axis. ठीक है, तो ये मुझे एक वैल्यू बताता है. इस वैल्यू का जो मैग्नीट्यूड है, दैट टेल्स अस अबाउट
measure of slope with x-axis, which means कि अगर मैं एक एंगल देखूं इसका, ठीक है, और L2 का अगर मैं एंगल देखूं और L3 का तो एंगल बन भी नहीं रहा, which means कि अगर मैं स्टीपनेस देखूं तो L1 की ज्यादा है, which means कि gradient of L2 is greater than gradient of L1 is greater than gradient of L2, क्योंकि स्टीपनेस पहले वाली की ज्यादा है, दूसरे वाली की कम है। ये पॉइंट क्लियर है इसमें कि अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लें और 2 पॉइंट्स L2 के ले लें और ग्रेडियंट फाइंड कर लें, तो L1 की ग्रेडियंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। विल ट्राई दैट इन द थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन ये फैक्ट ठीक है, सादिया आयशा सही है। बाकी स्टूडेंट भी बता दें, ग्रेडियंट का कोर आइडिया जो है वो स्लोप के साथ है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट ग्रेडियंट ऑफ L3, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज फॉर द फैक्ट के दिस विल बी जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा जीरो होता है इसका ग्रेडियंट, क्योंकि उसका स्लोप होते ही नहीं है, ठीक है। सो L3 का ग्रेडियंट जीरो होगा। सेकेंडली, अगर मैं ग्रेडियंट ऑफ L4 देखूं, इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इन चारों का आइडिया है। फर्दर मोर अगर हम जाएं तो हमें इस चीज का भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट होता है, which means कि if you find gradient using these 2 points, or if you find gradient using CD, यहाँ पे gradient M1 है, M2, since the angle is same, तो M1 और M2 दोनों के gradient से सेम आंसर आएगा, ठीक है। So as long as it's a straight line, the gradient will be constant. कर्व के केस में gradient constant नहीं होगा। Let's say मैं कहता हूं कि if we have a curve like this, तो शुरू में अगर मैं इसका एक रेफरेंस एंगल देखूं, शुरू में स्टीपनेस देख लें और बाद में ये एंगल्स देखें, तो एंगल क्या हो रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो whenever you see a graph like this, so we will say the gradient is non-uniform, which means it is not constant, or you can say the gradient is increasing or decreasing. Decreasing. Decreasing, ठीक है, क्योंकि वो एंगल कम हो रहा है। And finally it comes to zero. यहाँ पे ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, सो M1 जो है वो जीरो है। Similarly, if you see a graph like this, जनरल डिस्क्रिप्शन ये है कि gradient is non-uniform, and in this case अगर मैं शुरू में एंगल देखूं, शुरू में बन ही नहीं रहा है, लेकिन at different points if I compare the angle with horizontal line, तो ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये तो बैकग्राउंड है जो आपको चाहिए रिगार्डिंग द ग्रेडियंट। एरिया अंडर द ग्राफ का मैंने जनरली बता दिया था कि इफ इट्स अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विद अ सर्टेन एंगल, तो ये ट्रायंगल हो जाता है। Yes sir, 1/2 into base into height, ठीक है।
और अगर आपके पास a line like this तो हम इसको trapezium कह देते हैं, in which these are the parallel A sides and this is plus B divided by 2 into height. Exactly. ठीक है, तो अभी इन वैल्यूज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में पास्ट पेपर से। I'll start past papers in a while. अच्छा, ये तो मैंने मैथ्स का पोर्शन बताया है, ठीक है। We need to talk about graphs of kinematics, ठीक है। ग्राफ्स ऑफ काइनेमैटिक्स जो है ना, इसमें इट शुड बी वेरी क्लियर कि देखें, मेमोराइज मत करें कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है या इसका एक ग्रेडियंट। आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें कि gradient is always change in y divided by change in x. So if y-axis is distance, x-axis is time, the gradient will be speed. Yeah. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा वो स्पीड शो करेगा इफ यू फाइंड ग्रेडियंट एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। इसी तरह gradient since it is change in y divided by change in x, अगर speed या velocity time graph है वो आपको acceleration show करेगा। If we plot displacement over time, आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो तो नहीं है? सर कभी कभी स्टक हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ये ग्रेडियंट क्या देगा? वेलोसिटी देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्रेडियंट स्पीड टाइम का अगर मैं प्लॉट करूं, इवन दैट विल गिव मी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज अबाउट y ओवर x। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। अच्छा, नाउ विल टॉक अबाउट एरिया। तो देखें, एरिया याद रखें, इट इज y इंटू एक्स, ठीक है। एरिया में अगर आप देखें ना, मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होता है, बेस इंटू हाइट, पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस y एक्सिस पे है, टाइम x एक्सिस पे है, तो ये क्या देगा? डिस्टेंस इंटू टाइम क्या होता है? सर if you have let's say displacement time graph, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम होता है, ये आपको कुछ नहीं देता। देयर इज नो फॉर्मूला इन फिजिक्स जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो इसका एरिया doesn't give us anything at all. But when we talk about area which is y into x, velocity into time क्या होता है? अगर मैं velocity का फॉर्मूला देखूं, डिस्टेंस, हाँ, अगर मैं प्रॉपरली देखूं तो इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। ये मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं y इंटू एक्स करूं और स्पीड इंटू टाइम हो, सर डिस्टेंस देगा, ये मुझे डिस्टेंस देगा, ठीक है। सो ये तो हमारे पास काइनेमैटिक्स के हवाले से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है।
फ्री फॉल मैं नहीं इस वक्त में, वो मैं डायनामिक्स नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा।